Hello children, today we will see the third part of the chapter Is matter around us is pure. So today we will see about the saturated solution. Now first of all see the definition of the saturated solution. Saturated solution is a solution which cannot dissolve any more of a solid at the given temperature. Okay. Now see what do you mean by saturated solution. First of all I will explain you with the help of one experiment. Okay. In this experiment you have to take a beaker. Okay. You have to take a beaker, two beakers, and add 50 ml of water in that beaker. Okay. In that beaker, in one beaker you add salt and add salt till no more salt dissolve in it. जब तक उसमें salt dissolve होना बंद ना हो तब तक you can add the salt in one beaker. And in another beaker similarly you add the sugar. Okay, and you continuously add the sugar and stir the sugar in a beaker till no more sugar dissolve in it. Okay. At that time, at that condition we get that salt in one beaker and sugar in another beaker stop dissolving. Okay. The solution which is prepared in this case is called the saturated solution. But as soon as you start heating that solution, okay, again the salt in one beaker start dissolving, and again you start heating the or increase the temperature of another beaker, the sugar also start dissolving in it. Okay. So this type of a solution which is prepared is called the saturated solutions. Now see, again I am defining the saturated solution. It is a solution which cannot dissolve any more of solute in the given temperature. मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में अगर सॉलिड डिज़ोल्व नहीं होता है, हमने ऐड करते गए सॉलिड को सॉल्वेंट में, मगर एक कंडीशन ऐसे आएगी कि सॉलिड स्टॉप डिज़ोल्विंग. ओके, तो उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है. और जैसे ही हमने उस सॉल्यूशन को हीट करना स्टार्ट किया तो सॉलिड विल स्टार्ट डिज़ोल्विंग. Okay. Now see what do you mean by solubility. Solubility of a substance is the amount of solute present in the saturated solution of the substance. Solubility मतलब जितना solute present है उस solution में. Okay. Again I am repeating, उस solution में जितना solute present है that is only called the solubility of that solution or solubility of the substance. ठीक है. अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे. इज़ अ सॉल्यूशन विच कैन डिज़ोल्व सम मोर ऑफ सॉलिड एट द गिवन टेम्परेचर. जब तक सॉलिड डिज़ोल्व हो जाता है, जब तक वो सॉलिड डिज़ोल्व होता है नॉर्मल टेम्परेचर में, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब आपको सॉल्युबिलिटी पता करना है, तो सॉल्युबिलिटी का पता करना है. द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस आर डिफरेंट. अब देखिए हर एक सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी अलग है ना. सॉल्ट पहले डिज़ोल्व हो जाता है या शुगर पहले डिज़ोल्व होता है, यह सब अलग अलग सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है और अलग अलग टेम्परेचर में उनकी सॉल्युबिलिटीज़ होती है. देन सी द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. नाउ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन. एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है. ओके. एक कोई भी सॉल्यूशन है उसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है वो उसका कॉन्सेंट्रेशन कहलाएगा. ठीक है. अगर सपोज हमने वी कैन ऐड शुगर इन वाटर, तो अमाउंट ऑफ शुगर विच इज़ प्रेजेंट इन द वाटर इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. नाउ सी द फॉर्मूला. Concentration of solution is equals to amount of solute upon amount of solvent, या फिर amount of solute amount of
upon amount of solution. Okay. Now this is a formula for the concentration of solution, means amount of solute present in the solvent or the amount of solute present in a solution. Now we can also express this concentration of the solution by mass percentage or by volume percentage. Okay. A mass percentage of solute, if suppose the solute is solid, ठीक है, अगर वो सॉलिड कंडीशन में है तो हम फाइंड आउट करेंगे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन. अगर सॉलिड जो लिक्विड कंडीशन में, वी कैन फाइंड आउट द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन. Here the formula is given to you. Mass by mass percentage of solution is equals to mass of solute upon mass of solution into 100. And here the mass by volume percentage of solution is equals to mass of solute upon volume of solution into 100. Then see, there are the different method of separation of mixture. Okay. Here in this chapter there are the different methods is given to you. The first method is evaporation, second method is centrifugation, third method is decantation, fourth method is sublimation, fifth method is centrifugation, sixth method is chromatography, and the seventh method is distillation and fractional distillation. So thank you children. That's all for today.